so please be with me honestly. Yesterday I was telling you a story, the kingdom of fools, and by now you know that that was the kingdom of fool because all the activities of that kingdom were were foolish. The king and the minister of that kingdom were the biggest fool because they wanted to run the kingdom according to their own wish. So they declared that they ordered for all the people of the kingdom that the day must be changed into night and the night must be changed into day. And you know very well that the activities of the day must be done in night and the activities of night like sleeping must be done in day. And if anyone will not follow, or if no one will follow the order, he that person or that one would be punished by death. So all the people of that kingdom were compelled to follow that order. And you know what happened one day? One day in that city came a guru and his disciple, and they were amazed to see that in the daytime people were sleeping, there was no one on the road, there was the environment of night. And when the evening came, all the activities of the day started. So they were very much amazed, but gradually they knew that what is the matter. And the other thing they found there that you know everything was very cheap there. So and the guru's disciple and guru understood that this is the kingdom of this is the place of fools, and to live here is not safe. He realized, he understood it. So that is why he asked his sorry, he asked his disciple to leave that place because that was the place of fools, and fools, fools can do anything anytime. You can't say what they can do. But the disciple was too much greedy of eating. So he said, Guruji, everything is so cheap here. So I don't want to leave this place, and I want to live here. I want to eat things, so many things. So Guruji advised him that beta, please try to understand. You will be in trouble a day because of these fools. But the disciple did not agree with the Guru, and he remained there. But Guru left that place. And you know that in some days the disciple ate too much and he became a fat man. So now what happened? Please, I have told the summary of the story, of the part of the story that I told to you yesterday, and I think everything is clear to you. So I didn't tell you everything of the story, but the important things of the story I told you. And whenever you are told to speak the summary, so that is the summary. So in the summary, you must take the important points. Okay. So this way, I think this thing is also clear to you that how to tell a thing briefly. Briefly. Briefly means shortly. So you know what happened. Now
We are continuing the story. You know what happened? One bright day, a thief broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his food, sorry, and as he was carrying out his loot, sorry, loot ka matlab the things that he robbed from the house. Loot, LWT. Loot matlab lootna, लूटा हुआ माल. And as he was carrying out, out आ गया यहाँ पर, समझ लीजिए आप, ला रहा था. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed. अंदाजा लगाइए थोड़ा. Collapsed on his head and killed him on the spot. Mean the wall in which he made a hole and he went inside. And when he was coming back through that hole, the wall fell down, collapsed. समझ गए होंगे अब आप. On him, and he was killed. He means the thief was killed. क्लियर हो गया? फोकस करो थोड़ा सा, मजा आएगा. लिसनिंग करते सर आप. कोलैप्स का मतलब बता दिया ना, फेल डाउन. आप बताया ना मैंने. नहीं कोलैप्स्ड बोला या कोलैप्स्ड बोला? कोलैप्स्ड, ठीक. कोलैप्स्ड. लिसनिंग का ही तो मजा लेना है आपको, और करना क्या है बैठे बैठे. स्किल डेवलप करो अपनी. लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रख लेना. आप स्पीकिंग तभी कर पाओगे जब आपकी लिसनिंग कैपेसिटी होगी. आप लिसनिंग ही नहीं कर पाओगे तो स्पीकिंग क्या करोगे आप? समझ गए मेरी बात आप? सपोज इफ यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग and all the meeting is going on in English language, then how will you understand what the other people are saying? Tell me. What the other people are saying in English, would you be able to understand that without improving your listening skills? I think no. So that is more important than speaking. And as much as you listen, definitely you can speak in a better way. ध्यान रखना इस बात को. So when the thief was killed, and you know how he was killed, you know very well. What was he doing? He was carrying out the material that he looted from that hole. And when he was crossing that hole, when he was coming through that hole, suddenly the wall fell down on him and he was killed. क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सा मैंने बताया है आपको. I am trying to tell you in a simple way. Now what happened? मर गया चोर तो. सुनना बड़ी अजीब सी बात है. His brother means the brother of the thief, ran to the king and complained. आ गया समझ में? Ran to the king and means the brother of the thief went to the king and complained. What did he complain? Now listen to him. What did he say? डायरेक्ट में बता रहा हूं मैं आपको. योर हाइनेस. समझ गए ना? जब योर आ गया तो डायरेक्ट में चल रहा है. ऐसे समझा करो चीजों को. डायरेक्ट जैसे उसने बोला था उन्हीं शब्दों में आ रहा है. ये होता है डायरेक्ट. B21 वाले, ये होता है डायरेक्ट. इन्वर्टेड कॉमास में ही आएगा. वो कभी कभी किताबों में आप देखते हो ना, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ लिखा हुआ रहता है. दैट इज डायरेक्ट. उसी के शब्दों में लिखा हुआ है ये. सीख लो बेटा उन चीजों को. बहुत इजी हो जाएगी इंग्लिश. ऐसी हो जाएगी पानी की तरह. जितना डीपली मैं पढ़ाता हूं ना आपको, उस हिसाब से आपको लर्निंग करनी चाहिए. योर हाइनेस. These are the words of the brother of the thief. Your Highness, when my brother, ये my फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जब आता है ना, तो वो हमेशा डायरेक्ट में ही आता है. इनडायरेक्ट में तब होता है जब फर्स्ट और सेकंड पर्सन को हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं.
या दूसरे में भी चेंज कर सकते हैं। When my brother was pursuing स्पेलिंग चेक करो, अब तक तो लिख जानी चाहिए थी परस्यूइंग PERSUING वर्ब होती है। When my brother was pursuing his ancient, देखो स्पेलिंग ancient ancient चेक करो, ANCIENT ancient trade, पूरा नहीं हुआ सेंटेंस, क्लॉज है। फिर से सुनिए ध्यान से, सुनाऊंगा, आगे पढ़ो। A wall fell on him and killed him। दोबारा पढ़ूंगा इस सेंटेंस को मैं, फोकस करना जरा आप। अब एक साथ पढ़ूंगा पूरा, कोमास भी आएंगे कहीं पर बीच में, आपको पता चलने चाहिए। सेंटेंस का खत्म हुआ है आपको पता चलना चाहिए, फोकस करिए आप जरा। क्या कहा उसने? योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। आ गया समझ में? कुछ समझ में आया बेटा? कहाँ क्लॉज खत्म हुआ, कहाँ पे नया शुरू हुआ, कहाँ पर कोमा आया होगा, कुछ आया, अंदाजा लगा, समझ में आ गया सेंटेंस आपको? फोकस करो आप, लिसनिंग का मतलब यही होता है। घबराओ मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। कोई मीनिंग पूछना है? सर परसुइंग परसुइंग को तो समझ जाना चाहिए ना सेंटेंस के हिसाब से। व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई, एंशिएंट ट्रेड का मतलब हमारे पारिवारिक काम जो है, हमारा, हमारे परिवार का काम है, हमारा प्राचीन काम है, हमारा पुश्तैनी काम है। जब मेरा भाई हमारा पुश्तैनी काम कर रहा था, परस्यूइंग का मतलब यही हो गया ना, उसको कंटिन्यू कर रहा था। मेरे बाप दादा भी यही करते थे, तो मेरा भाई भी यही कर रहा था, मैं भी यही करता हूँ महाराज। काम है मेरा पुश्तैनी, मैं क्या करूं? चोरी करना मेरा धंधा है खानदानी। पुश्तैनी का मतलब खानदानी, पीढ़ियों से चला आ रहा है। समझ में आ गया होगा? दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। क्या कहा उसने? दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम बिकॉज द वॉल was of the house of the merchant। क्लियर हो गया? वॉल किसकी थी? मर्चेंट की। और वो वॉल गिर गई तो जिम्मेदारी कौन है? उस व्यापारी की है जिसका मकान था, जिसकी दीवार गिरी। मेरा भाई मर गया, चोरी कर रहा था, वो क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था। चोरी का, हाँ साहब, काम है हमारा खानदानी। दीवार गिर गई उस पे, मर गया मेरा भाई। जिम्मेदार तो वो है ना जिसका ये मकान है। समझ में आ गया? ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। देखिए यहाँ पर शुड हैव आया है, पर मैंने बताया ना, शुड को जब पास्ट में यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं? शुड के साथ हैव लगा करके, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो आ गया यहाँ पर। क्या कहा उसने? ही मीन्स द मर्चेंट, he should have built a good strong wall। उसकी जिम गलती है। You must punish, मस्ट आ गया यहाँ पर मॉडल। देखो आप कैसे आती हैं चीजें, वर्ब को पकड़ो। You must punish the wrongdoer। wrongdoer एक साथ है, गलत करने वाला, wrongdoer। and compensate, compensate लिखो, compensate, 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 स्पेलिंग चेक करो, COMPENSATE, compensate the family for this injustice। injustice लिखो, injustice, अपोजिट ऑफ जस्टिस, injustice लिख लिया। अब आपको कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा, फिर भी मैं इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ रहा हूं, फोकस करना। योर हाइनेस, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। This merchant is to blame। समझा दिया मैंने? This merchant is to blame। He should have built a good strong wall। You must punish the wrongdoer, जिसने गलत किया, the wrongdoer,
एंड कंपनसेट, कंपनसेट का मतलब मुआवजा, क्षतिपूर्ति की राशि, कंपनसेट, कंपनसेशन बनता है इससे नाउन, कंपनसेशन, मुआवजा। कभी कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं तो सरकार देती है ना, मुआवजा देती है कि नहीं देती, कंपनसेट, कंपनसेशन, कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, समझ में आ गया आपको? ओके, आर यू रेडी? सर यस। और ये आपने पूरा पैराग्राफ जो रिपीट करा, ये सब कंप्लेन थी। कह रहा है ना वो राजा को, राजा जब को कह ऐसे रहा शुरू हो गया था, कंप्लेंट तो थी ना। है सर, उसका भाई कह रहा है ना। हाँ, राजा के सामने। यस सर। बोलो, मैंने समझाया था ना, फर्स्ट पर्सन में ही आ रहा है सारा का सारा। राजा के सामने उसका भाई खड़ा हुआ है और वो कह रहा है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? सर हम्म। सर राजा और मंत्री फूल थे या फिर पूरी उनकी प्रजा भी थी? क्या? फूल। सभी हो जाते हैं ना फिर तो। सर एक बात बताओ सर, प्रजा तो डर के मारे कर रही थी ना? डर के मारे कर रही थी तो, लेकिन ऐसा भी क्या डर? सर तो मरने का डर तो सबको भैया है। सब हो जाते हैं, धीरे धीरे सब ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं कब से चल रहा था वो राज, फिर सब ऐसे हो सर जाते जनता हैं। को रिवॉल्यूशन लाने। ये सब कोई बात नहीं, अभी इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस। सर जनता को डूडू रेवोल्यूशन लाना चाहिए था नाउ सर। आई हैव सम क्वेश्चंस, गेट रेडी फॉर इट। Suddenly someone's name will be called, and that person will have to answer the question. This is the test. कैमरे सबके चालू रखें अपने अपने। Who went to the king? बिल्कुल सीधे बैठे रहो। Who went to the king? आदित्य। सर द प्रजा 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 आंसर वही है। भूल सर गया मेरा तो कैसे आंसर कर वही है सकते सर। हो? सर प्रजा इतनी मंद बुद्धि प्रजा थोड़ी है प्रजा तुझे जो फट से भूल गया। सर प्रजा। Who went to the king? Went to the अंजलि। king. अंजलि। सर प्रजा ही है। Thieves, brother. Thieves brother. Very good. Da लगाओ। The thieves brother. Why did he went to the king? Why did he go to the king? Why did he go to the king? आराम से टाइम दे रहा हूं मैं। Why did he go to the king? कैमरे चालू रखो अपने अपने। खुशी। For complaint. For complaint. Very good. What was the complaint? देखो मैं आंसर में से क्वेश्चन निकाल रहा हूं। What was the complaint of him? What was the complaint of him? Him means the brother of the thief. कैमरे चालू रखो। काजल। Yes, sir. The complaint was that his brother was killed by the wall because because the mistake of the merchant. Okay, sir. Done, sir. सर आगे भी बोलना है? ना ओके बेटा, बस थोड़ा सा हमें अंदाजा, हमें क्या होता है एक्चुअली, इससे क्या होता है, ये जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं ना, इससे हमें ये पता चलता है, बाय दीज क्वेश्चंस वी नो दैट वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट दैट थिंग। इसको हम कहते हैं लिसनिंग कंप्रिहेंशन, जैसे रीडिंग कंप्रिहेंशन होता है।
कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, उस चीज को समझना। वर्ब होती है कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड समझना, और कॉम्प्रीहेंशन जो बन गया ना, वो बन गया नाउन। तो कॉम्प्रीहेंशन दो तरीके का होता है बेटाओ। एक तो होता है राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप पढ़ा, वो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ करके समझ रहे हो। आते हैं ना पैसेज आपके, हर एग्जाम्स में आते हैं ऐसे पैसेज। दूसरा कॉम्प्रीहेंशन होता है लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, कि आप सुन करके समझ रहे हो उस चीज को। समझ में आ गई बात आपको? तो दिस इज लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब आप क्वेश्चन का आंसर हमें कब दोगे? तभी दे पाओगे ना जब आप उसको समझ गए हो। दैट व्हेन डिड, बस असल हम समझिए जरा, बहुत माइन्यूटली क्वेश्चंस पूछता हूं मैं हमेशा। व्हेन डिड द वॉल फॉल डाउन? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, छोटा सा। व्हेन डिड द वॉल फॉल डाउन? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। सिमरन। The thief, the thief, mm, the thief had made a hole in the wall. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हेन डिड द वॉल फॉल डाउन? ओके, अनुज। Sir, when the thief was looting loot, when he was coming with loot, व्हेन coming ही out. वाज कमिंग आउट विद लूट, who made a hole in the wall? विपिन। ये सिंपल सा क्वेश्चन। Who made a hole in the wall? विपिन। गौरव। सर thief. हाँ, दा लगाओ ना यार, अब तो प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए। द थीफ। When did this incident take place? In day or night? विपिन नहीं है। हर्ष। Sir in day. In day, okay, okay. Who killed the thief? Rohit। Sir the wall. The wall. Means the falling of wall. Sir, good question. Okay. And who owned that wall? स्पेलिंग बोल देता हूँ, OWNED, owned। Who owned that wall? कोमल। Sir, the merchant. शाबाश, a merchant। Who was to blame? Who was to blame for that killing according to the brother of the thief? So simple question। लक्ष्मी।
According to his brother, he blamed on merchant. Only two बोला ना, blame to merchant. Blamed to merchant. शॉर्ट आंसर भी बोल सकते हो आप, बस हमें उतने में ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. What did the brother, हमने दा लगा दिया तो वो thieves brother के लिए समझ जाना चाहिए आपको. ऐसे दा का मतलब ये होता है, दा जो आर्टिकल होता है ना बेटा, वो ऐसे डेफिनेट कर देता है चीजों. What did the brother want from the king? What did the brother want from the king? Rakshit. Sir, to get compensation from the merchant. Anything else, Harshit? Yes, sir. Sir, to punish the merchant. To punish the merchant. Very good. शाबाश. एक राउंड पूरा हो गया, सबका नंबर आ गया प्रियंका के अलावा. तो मैंने प्रियंका से इसलिए नहीं पूछा कि अभी थोड़ा सा लेट आई है, ठीक है ना. सारा क्लियर हो गया अभी तक का जितना भी है. सर हाँ तो कुछ नहीं सर. सर. यस सर, चोर भी देखो दिन में चोरी कर रहा है सर. हाँ करते हैं, तब ये तो बात है. एंजॉय करो आप, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना चाहिए. आप जब मूवी देखने जाते हो ना, मैं कहता हूँ कि आप जब मूवी देखते हो ना तो उसको एंजॉय करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. अरे यार इतना जल्दी बड़ा कैसे हो गया, 3 घंटे की मूवी में पैदा भी हो गया, बड़ा भी हो गया, बुढ़ा भी हो गया, मर भी गया. 3 घंटे की मूवी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मूवी है वो, ठीक है. तो एंजॉय करो आप स्टोरीज को बस. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग इट. द किंग सेड justice will be done. The king said, after listening to the brother, the king said, okay, justice will be done. Don't worry, you are my people, you are my praja, you are the citizen of my kingdom, so you need not worry, you will be given justice. And at once the king summoned, लिखो आप, summoned लिख लो आप, फिर स्पेलिंग बोलूंगा. summoned, SUMMONED. summoned का मतलब बुला भेजा, बुला लिया. and at once एक एडवर्ब है यहाँ पर. at once दो वर्ड है, फ्रेज है. at once, immediately, at once, these are the same. at once summoned the owner of the house. ऑनर लिख सकते हो आप, ऑनर लिख सकते हो आप. फिर से सुनिए, छोटा सा पैराग्राफ है. The king said to the brother that don't worry, I'm your king, I'll give you justice. And then the king at once, immediately summoned the merchant, summoned the owner of the house. क्लियर हो गया? So merchant came. When the king summoned the merchant, it was necessary for the merchant to come. If government summons you, definitely you will have to go. Otherwise, you will be taken by police. So that system was also that time present. So the merchant came. When the merchant reached to the court of the king questioned him. Question verb भी होती है, answer verb भी होती है. The king questioned him. So what was his first question? The king asked, what is your name? And the merchant replied, such and such. Your Highness, such and such का मतलब फलाने राम, ढिकने राम, कुछ भी नाम बता दिया होगा. नाम, name is not important here. कहते ना फलाने राम, ढिकाने राम,
तो सच एंड सच कुछ भी नाम बता दिया होगा उसने. Were you at home when the dead man burgled your house? Now this is the question of the king. Now the king asked, were you at home when the dead man burgled? लिख लो burgled, लिखो स्पेलिंग लिखो burgled, burgled, BURGLE. ये होता है बगल. बर्गल का मतलब होता है चोरी करना, चुराया, मतलब इस तरीके से सेंधमारी करना. सर घुसपैठ करना. घुसपैठ करना थोड़ा सा अलग हो गया. बर्गल का सर वो तो इन्वेजन चोरी हो से जाएगा ना. रिलेटेड होता है. बर्गलरी, चोरी को हम बर्गलरी भी कह सकते हैं. अब बर्गलरी टुक प्लेस, ठीक है. बर्गलरी चोरी. ओए, चोरी चकारी. चोरी मतलब बर्गलरी का मतलब यही है कि चोरी. और सर रॉबरी. बर्गल, बर्गल एक वर्ब होती है, BURGLE. डकैती. बर्गल. ज्यादा नहीं, अभी घुस जाओगे ज्यादा अंदर हो जाएगा फिर. अभी ये लिंक करना चकारी. पड़ेगा स्टोरी से. नो, बर्गल का मतलब चोरी करना. व्हेन, सुनिए दोबारा से. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord. The merchant replied, yes, my lord. He broke in, and the wall was weak. The wall was weak. It fell on him. That was the reply of the merchant. What did he say? फिर से कह रहा हूं मैं. उसने कहा yes, my lord. अब my lord कौन बोलेगा? वही तो बोलेगा सामने जो मर्चेंट है. सामने कौन है? अभी किंग है और मर्चेंट है. बस इमेजिन किया करो. yes, my lord. He broke in. चोर के लिए. ही किसके लिए आ रहा है? चोर के लिए. He broke in, and the wall was weak, so it fell on him. Clear? हाँ, clear. Now what did the king say? What did the king say? Your wall, Mr. Merchant, your wall killed this man's brother. You have murdered, killed. You have murdered. मर्डर तो सुना होगा ना आपने. मर्डर तो कॉमन वर्ड है. मर्डर हो गया. मर्डर मिस्ट्री. मर्डर हो गया. हत्या, कत्ल. You have murdered a man, and we have to punish you. समझ में आ गया? क्लियर हो गया? फिर से पढ़ के सुना रहा हूं मैं. छोटा सा पैराग्राफ है. What did the king say? King said, your wall killed this man's brother, and you have murdered a man, so we have to punish you. So now the dialogue of the merchant. What does merchant say? Oh my lord, replied the helpless merchant. Helpless यहाँ पर एक एडजेक्टिव आ गया. Helpless merchant. अब डायरेक्ट में आ रहा है सब कुछ. सुनना. I didn't put up the wall. समझ गए? Put up. I didn't से तो आप समझ गए कौन सा टेंसर है. I didn't put up the wall. सुनना पूरा भी. Put up का मतलब समझ में आ जाएगा आपको. ये मैंने कहा ना, आगे पीछे के रेफरेंस से आप फोकस जितना होगा ना, आप देखो कितना क्लियर हो जाता है. I didn't put up the wall. It is really the fault of the man who built the wall. So this is not my fault. I didn't build this wall. This wall was built by a mason, karigar, mistri. That person is guilty for it. I am not. He didn't build it right. मर्चेंट ने क्या कहा? He किसके लिए आ रहा है? To the man who built this wall. He didn't build it right.
So, my lord, you should punish him, not me. Clear हो गया? Without समझ में आ गया? चलिए हो जाए थोड़े से क्वेश्चन एक राउंड में और जरा सर रिपीट कर दो एक बार फिर से सुना देता हूं पूरा मैं आपको बार। और क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं पहले शुरू से आ सकते हैं क्वेश्चन So when the brother of the thief went to the king and complained about the murder of his brother, according to him that was done by the merchant. So he requested the king to punish the merchant and compensate the family of the thief. So the king said, justice will be done, mister. You need not worry. And at once the king called, yes, summoned the owner of the house. You know who is the owner of the house? So when the merchant arrived, merchant means the owner of the house. When the merchant arrived, the king questioned him, what is your name? And the merchant replied, such and such, Ramlal, Pyarelal, Sitaram, कुछ भी आप कह सकते हो. Your Highness. Highness is a respect to the king. Maharaj, Mahamahim, were you at home? The king questioned him. Were you at home when the dead man burgled your house? The merchant replied, yes, my lord. I was at home. He broke in and the wall was weak and it fell on him. Maharaj, what can I do? So the king said that, mister, your wall killed a man. You know, this man's brother was killed by your wall. So in a way we can say that you, because that was your wall, you killed, you murdered a man. So you must be punished. Clear ho gaya? But the merchant said that, Maharaj, this is not my fault because I am only owner. I didn't build that wall. That wall was built by a mason. Mason समझ गए ना आप? MASON, mason का मतलब कारीगर जो मकान बनाता है, mason. So Maharaj, if someone is guilty for this, so Maharaj, that is the mason who built this wall. So please punish him, not me. Clear हो गया? So my question is that what was the assurance of the king to the brother of the thief? Assurance, लिख लो word ASSURANCE, assurance. मीनिंग भी लिख लो इसका, आश्वासन. Yes, come on. Or I can change the language of this question, that how did he assure? Assure verb हो गई यहाँ पर, ASSURE. How did he assure the thief's brother? So I think you are ready to answer this question. Rakshit. Yes, sir. The king said to the brother of the thief that justice will be done. Very good. And what did he do? At once, what did he do just after giving him the assurance? Rakshit. Harshit. Yes, sir. Harshit. Sir, he summoned the owner of the house. Who was the owner of the house, Komal? Sir, the merchant. The merchant.
What was the connection of the merchant from this case? Khushi. सर कुछ नहीं. Khushi. नहीं सर Because he was honor wall honor Of the of wall. wall और because क्यों लगा रही है? of the wall. अच्छा because लगा दिया. ओके ठीक है. हाँ बोलो और सब बोलो. सर अगर अपन एन ऐसे लिख देते मर्चेंट ही था सच एंड सच तो मार्क्स मिलेंगे नहीं तो वो आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन उसमें क्योंकि मर्चेंट का नाम ही नहीं आया कहीं पर तो दैट इज that question must not be asked because there is no name of that merchant here in this story. तो The next सच एंड question is that who summoned sorry who summoned the merchant? Very simple question. Who summoned the merchant? Aditya. Sir, the king. Shabash. शाबाश Whom did the king summon? Whom did the king summon? Harsh. क्या सर मेरे को हर्षी बोला क्या मेरे को तो ऐसे सुनाई दिया था. सर द मर्चेंट The merchant. Why did the king summon the merchant? Rohit. Because, sir, the wall was of the merchant that fall on the thief and killed him. Okay. What was the first question of the king when the merchant arrived to the court of the king? So what was the first question of the king? Anjali. What is your name? Very good. Shabash. Shabash. उसका नाम था सच एंड सच So what did he answer? मतलब what did the merchant answer? सोनिया नहीं ये ना सिमरन. Yes, sir. The merchant answered, he didn't make the wall. क्या पूछा था मैंने क्वेश्चन पागल. Sir, he answered such and such. अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग. तो अंजलि ने कहा कि व्हाट इज योर नेम. देन आई आस्क्ड दैट व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ द मर्चेंट आफ्टर दिस क्वेश्चन. समझ में आया? आगे से जवाब दे. सर तो नाम ही नहीं बताया. कुछ तो दिया ही होगा जवाब. गूंगा था क्या जो जवाब नहीं देगा. कुछ तो बोला ही होगा. हाँ सर बोला मैंने. बोला था तो बताना फिर. छुपा क्यों रही है? Sir, he said such and such. सच एंड सच. वेरी गुड. शाबाश. इतनी देर लगा दी तने आंसर देने में. बता ये तो छोटी छोटी सी बातें होती है. ओके. यस माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you understand by burgle? Can you tell me the similar word of burgle, Anuj? सर रॉबिंग रॉबिंग हो सकता है पर मैंने बर्गल बोला है तो रॉब बोलो आप. या रॉब स्टील ओके सर स्टील रॉब सर लूट these are the similar of burgle. सर लूट भी लूट भी हो ही जाएगी एक तरीके से क्योंकि यहाँ पर लूट वर्ड यूज किया है ना तो वो लूट ही हो गया एक तरीके से. ओके सर What was the next question or second question of the king? Gaurav. Sir, the second question was what were you doing when the thief broke in your house? No. Kajal. Yes, sir. The
question of the king is that were you at home when the burgle burgled the thief? बर्गलरी टुक प्लेस ऐसे भी कह सकते हो आप, चेंज कर दो। When the burglary, नाउन बना दिया मैंने उसको, बर्गल को, बर्गलरी टुक प्लेस को मैंने यहाँ पर वर्ब की तरह डाला, जब चोरी हुई थी। Okay. ऐसे सीखते हैं बेटा, शाबाश। So was he at home, Lakshmi? Yes, my lord. Yes, my lord. Very good. Okay. रंग गई उस रंग में, ये भी है ना, बिल्कुल दरबार में ही पहुंच गई ये तो, पूरा इमेजिन कर लिया इसने तो। वेरी गुड, शाबाश। सो व्हाट डिड द मर्चेंट रिप्लाई? Actually, what was the reason that was given by the merchant of falling the wall? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार सुन लो फिर से। What reason was given? What reason of falling the wall was given? पूरा का पूरा सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, वो ध्यान से देखो आप। What reason of falling the wall, पूरा आ गया ना सब्जेक्ट, वैसे वॉइस में बन रहा है, was given by the merchant। पकड़ना सीख जाओ, फोकस करना सीख जाओ। What reason of, या what reason for falling, या what reason of falling the wall was given by the merchant? खुशी? The merchant replied that the was weak. बेटा आवाज कट गई, आवाज कट गई। सर बिल्कुल नहीं आ रही। कट रही है आवाज, आप तो रही है आवाज बेटा, कट रही है आवाज बहुत ज्यादा, जैसे बार बार में जो आपका कनेक्टिविटी है वो ठीक नहीं। अब बोल। The merchant replied that the wall was weak. शाबाश, So बस 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 बस, the wall was weak. So whom did the king want to punish? तो नंबर सबका आ गया, कौन रह गया? हाँ प्रिया, whom did the king want to punish? I don't know. है जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही मैडम। शादी का फैसला तो पता नहीं है आपको मैडम? आपके ऊपर टीवी भी चल रहा है आसपास, तो वो आवाज साफ नहीं आ रही मेरे को। सो अगर आप, आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। सो एंड माय दिस क्वेश्चन गोज टू, सबका नंबर आ गया? कोई रह गया अभी बताओ पहले तो, सेकंड राउंड में सबका नंबर आ गया? आदित्य, Sorry, sir. हैं? Sorry, sir. I don't know the answer. Why? Why? Were you not listening to me Were you when not I was listening telling the story? telling the story? So when I listen that thing, what that yeah, first you told the question of you asked the question related the story, so that of that time your voice is not coming clearly. But you listen But you listen to the story. to the story. Yes, sir. So this is the So this is question the from that question part that you that have part listened. that you have listened. That whom That did whom the did king the king want to punish? क्वेश्चन समझ में आ गया? question समझ में आ गया? Sir, please repeat again. I can remember that time. Okay. Who
Whom, sorry, Sorry. whom did the Whom did king the king want to want punish? to punish? The merchant. शाबाश, Shaban. फोकस करके रखा कर थोड़ा सा. Why did the king want to punish the merchant, Anjali? Because the wall is of his. The wall was The wall was his. of him. Of him. Yes. So then, how did the merchant try to save himself? अब यहां पर himself क्या आ गई? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया. पकड़ लिया करो ऐसी चीजों को. How did the merchant save himself? चलो ट्राई भी हटा दिया मैंने. सिमरन. Yes, sir. The merchant said, I didn't make शाबाश. बोल बोल बोल. I didn't make the wall, so I don't respond. I am not responsible I am not responsible for it. this. According to him, who was the responsible for it? According to the merchant. Merchant said that, sir, sorry, sir, this ball was not built by me. So then, according to him, who was accused? According to the merchant. Anuj. Sir, the makers of the wall. The Sorry? maker of it. Sir, who built the wall? The person who built the wall. Okay. Wall. Yes, sir. Thank you very much. This session was very nice. I am very much happy. Good going. Keep it up.